Good morning, class 7th. Today's topic is major public health care programs. So in this topic we will study about the what are the some major public health care programs that are governed by government. So universal immunization program. The coverage of the program first launched in the urban areas means शहरों में in 1985 was progressively extended मतलब अच्छी तरीके से उसको बढ़ाया गया to cover the entire country by 1990 between 1988 and 2006 there have been a decline इन 6 डेडली डिसीजेज जिसकी वजह से 6 जो डेडली डिसीजेज थी एंड जिससे आदमी मर जाता था सच एज डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस मीजल्स नेनोटैल टेटनस एंड पोलीमाइलिटिस Hepatitis B vaccination program which was started in 2002 in 33 districts and 15 cities as a pilot project has been expanded to all the districts of states showing good performance. मतलब हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन किया गया अच्छी तरीके से 2002 में इन 33 डिस्ट्रिक्ट में. वैक्सीनेशन अगेंस्ट जापानीज इंसेफेलिटीज JE was started in 2006 and by 2014 its adult vaccine was introduced मतलब एडल्ट के लिए वैक्सीन लाई गई introduced in 179 endemic district in 9 states. Second number major public health care program was pulse polio immunization program. An outbreak of polio was witnessed in India with the spread of polio virus. इंडिया में बहुत बुरी तरीके से पोलियो वायरस फैला हुआ था. अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ 2006 676 cases of polio were reported from 114 districts. The year 2007 reported 874 cases from 99 districts of the country. Responding to this, supplementary immunization activities were intensified in the high risk areas. पल्स पोलियो के खिलाफ जो है हाई रिस्क एरिया में अभियान चलाया गया. एज ए रिजल्ट ओनली वन केस वाज रिपोर्टेड टू हैव टेकन प्लेस इन द ईयर 2011. और गवर्नमेंट के इस मेजर प्रोग्राम की वजह से 2011 में केवल एक ही केस पोलियो का सामने आया. इन द 11th 5-year प्लान यानी 11th 5-year प्लान जो गवर्नमेंट बनाती है अटेम्प्ट टू obtained zero transmission status for consecutive 3 years and obtained polio free certification. What are the some initiatives of the government? The government has taken some praiseworthy steps to eradicate polio from the country. गवर्नमेंट ने कुछ बहुत ही अच्छे कदम उठाए जिससे कि पोलियो eradicate मतलब हमारे देश से पूरी तरीके से ख़त्म हो गया. So what are these some initiatives? All the states and union territories means UTs in the country have prepared a rapid response team to respond to any polio outbreak in the country. B number, special booths are established in the areas bordering other countries so that every children below 5 years of the age entering our country are given polio drops. कोई भी बच्चा जो भारत में एंट्री कर रहा है पड़ोसी देश का या बाहर से आ रहा है उसको पोलियो ड्रॉप्स देना. ये सब गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम था जिसकी वजह से हमारे देश से पोलियो पूरी तरीके से मिट चुका है. इंडियन गवर्नमेंट हैज़ आइडेंटिफाइड 107 हाई रिस्क एरियाज. गवर्नमेंट ने 107 हाई रिस्क एरियाज जो है आइडेंटिफाई किए वेयर मल्टी प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेटजी इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड टू इंश्योर सैनिटाइजेशन hygiene and clean drinking water in addition to oral polio vaccine and other vaccination. Not only vaccination booths have been established but effort like house to house visit, vaccinating children at major bus stop, railway station, marketplaces, etc. have been intensified. So class, this is enough for today. Tomorrow we will study more about the national vector-borne diseases control programs and some important fact about the healthcare. So this is your homework to find out the hard word and read these next topic and learn the syllabus of second unit test. Thank you and have a nice day.